Is it visible now, guys? Yes, sir. Yes, sir. Oh, okay, good. So write these 6 questions. I will suggest that you do the ones. First, you do the ones that you know the answer of, that you have done it. And again, numericals हम बोलेंगे कि थोड़ा लास्ट में रखिए. Theoretical questions लिख लीजिए क्योंकि numericals में calculation में थोड़ा टाइम लग सकता है इस वजह से. The last suggestion is do like usually how you do your examination, and do it like that only. Sir, in the third question, do we have to like differentiate them? You just have to write like it is. You can think of them Definition as. enough, right? Sorry. Definition is only enough, right? हाँ, definition is enough, है ना? एक मार्क्स का है दोनों, ठीक है ना? उस हिसाब से Okay. करिए. Okay. Not all the differences. I can say this is of 1 marks. This is also of 1 marks. I can say this, both the questions together, these are of 2 marks. Then this fourth reaction is of also 2 marks. Fifth one is also of 2 marks. Let us see. For the sixth one, you can write 3 marks. श्राव्य नहीं है लगता है.
don't spend too much time on a question that you are not able to, है ना? Move on. एक बार सबको try कर लीजिए कम से कम. Okay.
Hello, Shravya. Am I audible? I saw you were here. Okay. Acha. So did you join right now? Because I saw your name since starting of the class. Were you doing the question? When did you join? You're writing, na? Okay, fine, fine. So you just have like 10 minutes more for all of these questions, okay? So 10 more minutes, then we'll start. Obviously, you were not present in the last class, so how will you be informed? I announced it in the last class. No problem. We will discuss it, okay? I will discuss it right now only. Is your okay. When is your chemistry exam? Or is it done? आपको पहले होने का था. That got over तो फिर like अच्छा. Why? What happened? Okay. Computer science is left. हाँ तो छोड़ दीजिए इसको फिर इसको क्यों कीजिएगा? Can't you turn the mic on, Shravya? Okay. Yes, sir. Yeah. Sir, can you hear me? Yeah, I can hear you. So your chemistry exam is over? Yes, sir. Achha, Like I'm can you still having my computer exam. sorry? I'm still having my computer exam. So you are having computer exam. Okay, can you send the question paper to Nishkash, sir? So we are having Google Forms, so we cannot send Wait, what is objective type questions. MCQs? Achha. Yes, sir. So you don't have the questions. No, sir. It's a Google Form. So the link will be there, no? So we have to submit the link. It won't. So like, can you check that whether it is opening or not opening? Can you share the link? I will look for a way to get the. No, sir. It won't open because we have submitted a form. Only the teacher have to give the permission. You send me the link. No? You send me the link. I won't Sir, ask the teacher a permission. So I won't be able to send because it comes in Gmail. Like we have submitted a response successfully. That mail will come. We'll get the link only during examination. नहीं तो लिंक तो होगा ना आपके पास. It won't open, नहीं open, वो अलग बात है. Can you share the link? No, sir, I won't be able to share the link. I mean, it's a Google form. उसका तो URL होता होगा ना. You can copy the URL, right? So I'll try later and then I'll send it in
हाँ वो जो भी like discuss it you if where did you possible. get the वो link कहाँ आया था मेल पे? No, sir. No, we have Google Meet like during examination. Teacher will send that only during examination. Okay, got it, fine. वो तो like you don't have the link है ना? I will not be able to लग रहा है हमको लग No, रहा है sir. you don't have it ना? No, sir. We don't have it. अच्छा, okay, fine. So how was the question paper? Easy, tough? It was good, sir. Still good only. Okay. So online हुआ आप, so your exam was online, okay? तब तो बच्चों Yes, ने sir. से It तो was online. and all of the students they were in Google Meet and Yes, sir. teacher was okay. So proctored exam था Google Meet से, but still chances are there for cheating. So what now? आप ऐसे बस टाइम पास करने आए हो यहाँ पे? Like you have anything? You have any doubts or what? No, sir. This is my final exam, so I just came here to study. Like this might be continuing for 12th also. नहीं अभी तो 12th नहीं हो रहा है. 12th will start from mid of March, most probably 15th or 14th of March we can start. ठीक है? Okay, sir. Right now, though, we are just having revisions, questions, answers, doubts. So, sir, should I send these answers to discuss? अभी क्या कीजिएगा? आप तो रहने दीजिए. आपको इतना ही मन कर रहा है क्या आंसर लिखने का? अब तो हो गया आपका एग्जाम. आराम कीजिए. कंप्यूटर कैसा है आपका? पाइथन आ रहा होगा? Yes, sir. What are the topics in Python? क्या क्या आ रहा है? Lists, tuples, dictionaries, then societal impacts. Societal impacts भी है. Okay. Yes, sir. So you have list. वो सब कराया गया है आप लोगों को? Like how to run a for loop in a list? So for loop, yes, sir. But then that's No, not coming for exam. that's not coming. So what methods and attributes these should be coming from the lists, na? Like how to sort Yes. it, how to take it. Okay. Slicing, indexing, all those things. Slicing and that's all those things. Okay. So I see you would have some conceptual question also, no? Like for example, what is the difference between attributes and methods? Yes, Right? since it's MCQ, they'll give the option you have to choose any one of those. Okay, so Khalid, Hamza, Hiba, and Salman, you guys just take photo, write name, and send it to Nishkar sir.
Okay, Hamza, Hiba, Khalid, and Salman. Done, na? I hope you guys are sending the answers. No, sir. I'm doing sixth one. Sixth one. ये सब पहले करना था, है ना? ये हम बोल रहे थे, like do the theoretical ones before. अच्छा, I have got one answer. Sir, I had to switch computers. That's why. Oh, अच्छा, okay. Khalid? Khalid, are you there? Yes, Khalid, am I audible? Hello. Yes, sir. Okay. Where did you get this value delta H ethanol? Sorry, sir. In which question? Question number 2. The Sir, delta I H value. calculated in other paper. Calculated? How did you calculate? Can you show me how did you calculate? Can you send that photo? No. Other seems fine. No, sir, I didn't like calculate it actually. I was like revising through the textbook. I remembered the value for combustion of ethanol. But by the way, you don't have to write that, okay? ठीक है? And I mean Oh. वो मत ही लिखिएगा, ठीक है? Okay. Okay, because you have written है ना chemical equation सिर्फ चाहिए यहाँ पे, है ना? And possibilities are if that gets wrong, so teacher may cut marks, although it is not required. Okay. Okay, okay, sir. Okay. And your other answers are fine. You have reversible, irreversible. Okay, I can't see. Wait a second. Isothermal, adiabatic. It's fine. One is fine. Yeah, others are fine. Also, this question I have to see the number of carbons is fine. Number of hydrogen, fine. Oxygen is also 437. Yeah, fine. Good. Okay, good. What is meant by entropy? Okay, fine. It's good that you have written the answer that is validated by CBSE about entropy. It is the measure of, okay, fine. I have not got answers from Hamza and Hiba. Please send the answers. Sir, by the way, I couldn't do fifth question. I actually वो got नहीं किया stuck आपने? in that. So I skipped that. अच्छा, वो हमने देखा ही नहीं. Okay, Oh. fine. The- So ये fifth question ना, this is in the notes only. Enthalpy of formation of ethane. बस उसमें ये था कि all of these are enthalpy of combustion, right? So these values I have written with the reaction. ठीक है? So पहले भेजने दीजिए बाकियों का आंसर, है ना? फिर हम बताते हैं. Just raise your hand if you have sent the answer. Okay, Hamza, Hiba, please भेज दीजिए, इतना लेट मत कीजिए.
Please raise your hand if you're done. If you have sent the answer, not done. Salman has sent the answer. Hamza and Hiba, क्या हो गया? Sir, I sent. तो हाथ ये कर दीजिए ना, ऐसे आप क्यों हैं? ठीक है. What about Hiba? Yes, Hiba. किसे भेजा हमजा आपने? अनुष्का सर को? Yes, sir. अच्छा. I think आप सबका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है ना, लाइक ऑन दिस वीक ओनली. हमजा कब से है आपका? 6th 7th कब बताया था आपने? नहीं, The 6th final 7th. exam, हाँ, फाइनल एग्जाम 3rd मार्च. that is from 14th March. अच्छा, आपको 14th मार्च से है. खालिद, आप लोगों को कब से है? 6th 7th से है आपका? 6th. 6th से है. अच्छा. और हमजा का है 14th से. अच्छा 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 अच्छा, ठीक है. केमिस्ट्री कब है? पहला खालिद, पेपर ही केमिस्ट्री है. अच्छा, आपका पहले ही पेपर केमिस्ट्री है. ओके. Okay, I've got answers of Salman. I've also got answers of Hamza. हमजा, आपने कुछ नहीं किया. आप प्रिपेयर करके नहीं आए थे हमजा? Sir, not the numericals, like not thoroughly. नॉट थोरोली. नहीं, देखिए, हम बस यही कहेंगे कि न्यूमेरिकल्स ही कीजिए अब तो, है ना. एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक उठाइए. नोट्स पढ़ने की अभी कोई जरूरत नहीं है. नोट्स पढ़ने का टाइम कब था जब हम कहते थे न्यूज़पेपर रीडिंग करना है ना. दैट टाइम यू जस्ट हैव टू रीड द नोट्स. क्यों? दिमाग में बस चीजें रहे, है ना. राइट नो अभी आपको क्या करना है, लाइक द आउटपुट दैट यू वांट इज दैट यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन. सो यू नीड टू सी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, अभी आप उस फेज में रहिए कि बहुत सारे क्वेश्चन देख रहे हैं. क्वेश्चन कब देखिएगा? जब आप क्वेश्चन बनाइएगा. तो नोट्स पढ़ना बंद कर दीजिए, क्वेश्चन लगाइए. क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे डाउट आ रहा है ना. क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ईथेन फ्रॉम द फॉलोइंग एंथैल्पी ऑफ कंबशन डेटा. अब आपको इसी समझ में नहीं आ रहा कैसे होगा, तो जाइए फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पे. ठीक है, इस टॉपिक पे जाइए, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पे जाइए. देन उसके बाद देखिए वहां पे कि हमने कैसे कराया, नहीं कराया, है ना. यू विल गेट एन आइडिया देयर. Similarly, for example, here you are not having anything. At what temperature will the reaction become spontaneous considering delta H and delta S? तो यहाँ पे देखिए delta H भी आ गया, delta S भी आ गया. ठीक है, तो and there is also temperature. So you will go to the relationship between temperature and the entropy. ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन से टॉपिक कौन सा है उसको समझने की थोड़ा कोशिश कीजिए. ठीक है. ओके, 6th भी आपने पूरा नहीं किया हमजा. चलिए, नो प्रॉब्लम. हिबा का आंसर नहीं आया है. हिबा का आंसर आया है? अच्छा अच्छा, हिबा ने आंसर भेजा. ठीक है. Okay, I've got all of your answers. Yeah. हिबा तो एक बार देख लेते हैं. Okay, फर्स्ट का नहीं लिखा है हिबा ने, बाकी दोनों का लिखा है. उसके बाद ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी ठीक है हिबा आपका. ओ भाई, आपने भी कुछ नहीं लिखा है हिबा.
कैलकुलेशन तो किए ही नहीं है। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा काम। क्या पढ़ रहे थे आप लोग बताइए। हमजा आप बताइए क्या पढ़ रहे थे, आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे थे तो? जी सर क्या पढ़ रहे थे आप? केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे थे तो? केमिस्ट्री तो नहीं पढ़ा आपने, सर आई थर्मोडायनामिक्स नहीं हैड पढ़ा? इंग्लिश एग्जाम टुडे। अच्छा, इंग्लिश का एग्जाम था आपका, तो हमजा और के बाद दोनों का इंग्लिश का एग्जाम था, ठीक है। लेकिन प्लीज है ना, आप लोग प्रॉमिस करो कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करोगे, नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन कीजिए, उसी में आ यस जाएगा सर। ना आपको, एनसीईआरटी में मिल जाएगा, एक्सप्लेन रिवर्सिबल रिवर्सिबल, तो जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो भी हो जाएगा, ठीक है। नाउ लेट मी जस्ट आंसर दीज क्वेश्चंस फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर उनके बाद जिसको भी जो डाउट होगा वो बता देगा। I think the first question is quite easy because when in equilibrium nothing happens. If in equilibrium nothing happens, that means there will be no change in entropy. That is why delta S will be equal to 0. Write the chemical equation for, yeah, okay, Shravi is answering. ठीक है. Chemical equation for the enthalpy of combustion of ethanol. पहले ethanol को देखते हैं, ethanol लिखते हैं. C2H5, you'll write first of all ethanol, C2H5OH, and we'll react this with O2 because it is combustion. And when I have carbon and oxygen, I will form CO2. जब हाइड्रोजन से मिलेगा हमको क्या, हाइड्रोजन से मिलेगा H2O. Okay, now we need to balance this, right? We need to balance this, so this will be 3. I think this is done rightly by all of you, and then you will have 3H2O. Okay, a reversible process, irreversible process. I think you guys have written correct answers. Let me just see once again. A reversible process which direction can be reversed. Okay, it cannot be reversed at any step. Okay, remains constant, temperature remains constant, adiabatic. No, here temperature changes since heat cannot be transferred. इसमें थोड़ा सा आपने दिक्कत कर दिया है. In adiabatic, you just have to tell me that heat exchange is 0. Salman, this is for Salman, okay? Heat exchange is 0. Okay, let me see other answers. Reversible, irreversible, heat energy between. Hamza, heat is not a form of energy, है ना? It is not a form of energy. Heat is a mode of transfer of energy. Okay? Okay, Hamza? यस सर ओके। Okay, तो बता क्या लिखिएगा, there is no exchange of heat between the system and surrounding. ठीक है, there is no exchange of heat. Heat energy मत लिखिएगा, आपके टीचर सही करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हीट एनर्जी भी लिखिएगा तो सही होगा, टीचर आपका गलत नहीं कर सकता उसमें। which temperature is constant, ठीक है। एंट्रोपी, ठीक है, आपने एंट्रोपी लिख दिया, उसके बाद ये भी चलिए ठीक है आपका। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस क्वेश्चन हियर, और ये सवाल तो आई थिंक इट इज क्वाइट इजी। So what do we have? At what temperature will the reaction become spontaneous? Okay, spontaneous का मतलब delta G should be negative, right? Negative. है ना? Delta G should be negative. And what is delta G is equal to? Delta G is equal to delta H minus Delta H minus T delta S. T delta S, ठीक है, delta H minus T delta S। अब यहाँ पे आपको बस ये रखना था कि अगर एक काम करते हैं, like if delta G is 0, ठीक है ना, उतना हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, then we can go above 1 लो। अच्छा, यहाँ पे है आपके पास 450 है एंड डेल्टा S is 0.2 किलो जूल्स, राइट, 0.2 किलो जूल्स। सो जब डेल्टा G 0 हो जाएगा, okay, let us put that delta G as 0 first of all. So here you will have delta H is equal to T delta S, and delta S will be equal to, what will be delta H is equal to? Delta H, T निकालना है, sorry. So T will be equal So we to, have to find T. हाँ T निकालना, sorry, delta H upon delta S, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 450 upon 0.2, ठीक है। This is kilojoule per mole. This is also kilojoule per Kelvin per mole. So this will be in terms of Kelvin. ठीक है, let me just erase these marks from here. Okay, and then you will get 450 divided by 0.2 is how much? 1 by 5 now. Yeah, so this will be 450 into 5 Kelvin. So 45, 45, 45, 90. 90 is how much? 90 is 180, and 180 and 45 will be equal to 225. So this will be 2250. Okay, so at this temperature,
At this temperature, the delta G is how much? 0. I tried this At this one, temperature. but like I did more than half, and then I thought it was wrong, so I just scribbled it off. Actually, you scribbled it off. Okay. नहीं, बस यहाँ तक आपको ये करना था. Like now it is what? This is the value if we have, if the temperature, if the delta G is 0, है ना? So हमको क्या करना है? Negative करना. अगर negative करना है तो क्या करेंगे? When we have a temperature, at what temperature will the reaction become spontaneous? So you will write that this is the temperature at which it will become spontaneous, है ना? Or you can write above 2250, the reaction will become spontaneous. ठीक है? At what temperature? It is above 2250 Kelvin at any temperature. Okay, fine. अच्छा, again ये सवाल जो है ना, फिफ्थ क्वेश्चन, ये तो है आपके इसमें ही टेक्स्ट नोट्स में ही है, लेकिन फिर भी हम आपको एक बार दिखा दे रहे हैं. एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ईथेन अगर हमको करना है, इफ आई हैव टू कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ईथेन, so first I will write the reaction that is corresponding to the enthalpy of formation. I hope all of you remember whatever enthalpy of I am writing. For example, enthalpy of hydration, combustion, formation, or bond enthalpy. All of these enthalpy, they correspond to a particular reaction, right? We define them in terms of a reaction, correct? Yes or no? You remember this? इतना याद है ना आप लोगों को? हमजा, हिबा, आप लोग बताइए, and Salman. Yes. All of you, right? So you remember. So what is the formation of ethane? Ethane will be formed if you have C2H6, right? And this will be formed from the elements in their most stable state. So what are the elements? Carbon plus hydrogen. So carbon will be in carbon solid form, and hydrogen will be there in H2 form, right? In gaseous H2 form. This is the most stable state. And then we'll write 3 moles of this and 2 moles of carbon. So this is our target reaction. याद आ रहा है कुछ? Yes or no? Tell me. हाँ guys, बताइए. Yes, sir. Right. Now we have 3 different reactions in this question. They have not given you, but they are present. Okay. This is our target reaction. Now just leave it. Now we have been given. Now the given reactions. What are the given reactions? The given reaction number 1 is the combustion of carbon. So the combustion of carbon means carbon plus O2. It is going to give me how much? It is going to give me CO2. Second is our given reaction is of H2, na? Yeah. H2 plus O2 is going to give me H2O. It is going to give me H2O. So it is the combustion of H2. So here I will write half O2. Third, we have the combustion of ethane. So we have C2H6 plus O2. It is going to give me CO2 plus H2O. Right, now we just need to balance it. So you'll have 2 and there are 6. So this will be how much? 3. ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? यहाँ पे है हमारे पास 4, 7 ऑक्सीजन है, right? Here how much we have? Here we have 4 plus 3, 7. So this will be how much? 7/2. Correct? Yes or no? Please tell me. सही है यहाँ तक? कोई दिक्कत? Yes, sir. No problem, right? Now you tell me, this is our given reaction, and then we have to look at this reaction, target reaction, उससे match करना है ना? So in the first reaction, I can see that carbon and carbon, both of them are in the reactant. Both of them are in reactant, but here we have how much? 2 carbon atoms. So I will multiply this whole with 2, and also the delta H, that is equal to minus 393.5. This will also be multiplied by 2. Okay. Now this H2, it is also there in the reactant, and in the given reaction it is also in the reactant. Then I will multiply this by 3, because in the target reaction we have 3 H2. Here we have only 1 H2, and similarly the delta H of this also will be multiplied by 3. So it will be equal to minus 285.8 kilojoule. 85.8 into 3. Now the next reaction, that is C2H6. So I can see that C2H6 in the reactant, here it is in the product. So first of all, I will multiply this by -1. That means I will reverse it. Okay, so you will reverse it. And the delta H will be equal to how much? Just the minus of this much. So minus of this one will be plus of 15600. Okay, 15600.0 है ना? ठीक? So minus of this will be how much? Plus of 11560. अब क्या करना है आपको? अब इन सबको ऐड कर दीजिएगा तो आपका टारगेट रिएक्शन आ जाएगा. Then you just have to add all of these delta H's. Okay, I think you guys can do it, right? Yes or no?
हमजा, हिबा, खालिद बताइए, सलमान ये करके बताएं क्या पूरा? Yes, sir, we can. यू कैन ना, नहीं हुआ ना तो फिर आप इक्विलिब्रियम का देख लीजिएगा, यहाँ पे किया हुआ होगा, नहीं इक्विलिब्रियम सॉरी थर्मोडायनेमिक्स, एंथैल्पी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, नेक्स्ट क्लास होगा, ये तो है ना, सेम रिएक्शन, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ईथेन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। देखिए कंबशन है, ये भी कंबशन है, ये भी कंबशन है, ठीक है। सो रादर देन द रिएक्शन वी वर जस्ट गिवन दीज वैल्यूज, ठीक है, इसको आपको मैनिपुलेट करना था, फाइन। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? Okay, fine. Next question is the enthalpy. So I hope all of you have done this right. नहीं, Hamza और हिबा ने कुछ नहीं किया. So here you can see, here we have more moles, right? Here we have, there is combination happening. That means entropy is decreasing, right? So it is decreasing here. Sublimation means solid to gas. So here we have solid, it is concentrated, gas it is dispersed, right? Gas is dispersed, so this will, entropy will increase. Dispersion of energy is entropy, है ना? Crystallization of salt from brine solution. So ना crystallization का मतलब क्या हो रहा है? We are making solid. Okay, so we are making solid from a solution. So when you are going to make solid, what is happening? We are concentrating it. So that is why this will be, the entropy will decrease here. You got it? Yes or no? Please tell me. Guys? Yes, sir. Okay. Yes, And sir. fine. Okay then. Let me just okay. अच्छा एक चीज हम ये कर देते हैं. Saturday what I will do? Saturday I will take class of Khalid and Salman. Okay, Khalid, Salman. Yes, sir. Saturday को ना I will take class for only 2 of you. Okay. Okay, sir. Fine. Now in that class you will bring doubts. ठीक है? Okay. Khalid and Salman. Okay, sir. ठीक है, तो प्लीज आप क्या कीजिएगा, क्या करना है आप लोगों को, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी, है ना, जो भी आपके पास सवाल बचे हुए हैं प्लीज उसको कंप्लीट कीजिए एनसीईआरटी को। अच्छा, इट्स नॉट दैट अगर हम सैटरडे बोले तो सैटरडे को ही, किसी और दिन भी, कभी भी, लाइक इंडिविजुअली भी, अगर सलमान को जरूरत पड़ी या खालिद को जरूरत पड़ी ना कि कोई आप क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, नहीं हो रहा है, नोट्स में देखा, थोड़ा पढ़ने की कोशिश किया, नहीं हुआ, ठीक है, कहीं से आपने सोल्यूशन भी देख लिया फिर भी नहीं समझ में आया, ठीक है, देन एट द सेम टाइम आप मैसेज कर दो निष्कर्ष सर को, कैन आई हैव अ हाफ एन आवर सेशन विद सालिम सर, ठीक है ना, तो मतलब ऐसा बोल देना कि सालिम सर ने कह रखा, हम भी निष्कर्ष सर को बोल देंगे कि बच्चे कभी भी कुछ बोल सकते हैं, हमको एक बार इन्फॉर्म कर दीजिएगा, अनटिल अनलेस आई हैव अ मीटिंग ऑफ सम काइंड विथ माय ग्रुप हियर, अगर मीटिंग नहीं हुआ तब हम आप लोगों का जो भी डाउट वगैरह है वो हम ले लेंगे, ठीक है, तो कभी भी, इट्स लाइक एनी टाइम, ये बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि रात ना हो रहा हो इंडिया में, है ना, इंडिया में बस थोड़ा सा सुबह होना चाहिए, डे टाइम, रात मतलब 11 बजे के बाद नहीं, आपके यहाँ कितना बजेगा, 8:30 के बाद मत दीजिएगा आप लोग सब, है ना, ओके, निष्कर्ष सर भी नहीं जागे रहेंगे, एंड आई डोंट नो अबाउट मी, फाइन, दिस इज फॉर एवरीवन, हमजा हिबा के लिए भी है कि अगर आपको कभी भी इस तरह का कोई दिक्कत हुआ तो आप उसी टाइम मैसेज कर दीजिएगा निष्कर्ष सर कि सालिम सर ने कहा था कि कभी भी कोई डाउट हो तो एक बार बोल देने के लिए आप पूछ लीजिए सालिम सर से कि थोड़ा आधा घंटा 15 मिनट बता सकते हैं क्या, ठीक है, ओके, Yes, sir, sure. ठीक है, फाइन देन। अच्छा, तो खालिद और सलमान आपके लिए तो कोई स्पेसिफिक चैप्टर नहीं रहेगा टेस्ट के लिए क्योंकि आप लोग का एग्जाम होने वाला है, देन आई विल बी गिविंग यू क्वेश्चन फ्रॉम ऑल दी चैप्टर्स, ओके, खालिद एंड सलमान, Okay, sir. Okay, sir. है ना, और हमजा और हिबा आप लोग सैटरडे को मत आइएगा, ठीक है, आप लोग आइएगा संडे को, फाइन, Yes, sir. ठीक है, Sir, Thursday there will be no class. नहीं नहीं थर्सडे को नहीं होगा, थर्सडे नहीं है मतलब, लेकिन फिर भी अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग बोल सकते हो, Okay, sir. ठीक है, एक दिन में आप लोग क्या प्रिपेयर कीजिएगा, है ना, ऑल्सो फॉर हमजा एंड हिबा द नेक्स्ट चैप्टर विल बी इक्विलिब्रियम, ओके, ओके, हमजा हिबा, Yes, sir. चलिए, ठीक है, संडे, चलिए, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन, आप लोग एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, लिख लीजिए इसको,
Saturday. ठीक है, ओके, जिसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। श्राव्या आप तो आराम कीजिए, है ना? मे बी विल मीट ऑन March 14 विद द न्यू बैच, Yes, sir. है ना? ओके, आपके स्कूल कब स्टार्ट होने वाला है श्राव्या? So March 16th. March 16, चलिए ठीक है, तब तो है ना, वी कैन स्टार्ट फ्रॉम March 14 और समथिंग। हम फिर इधर एक हफ्ते का हम सोच रहे हैं छुट्टी ले ले कहीं से। चलिए ठीक है, ओके, नोटेड, राइट।